So today we'll start with the question number 10th one. So 10th question, the area of equilateral triangle ABC is 17320.5 centimeter square. With each vertex of a triangle as center, a circle is drawn with radius equal to the half of the length of the side of triangle. Find the area of the shaded region. Now look, so they have provided a equilateral triangle. What is given in the question is the area of equilateral triangle ABCD. So area of equilateral triangle. So ABC is a equilateral triangle whose area is 17320.5. Now, what is area of equilateral? As per the formula, it will be root 3 upon 4 into side square. So I'll say side यहाँ पे AB square is equal to 17320.5. So what is the value of root 3 provided in question? उन्होंने बोला है 1.73205 upon 4 into AB square is equal to 17320.5. So let us find the length of the side. So AB square is equal to 17320. So this will become reciprocal. So 4 upper this is okay. So AB ka square shall be equal to, let us remove the decimals. So यहाँ पे एक डेसिमल निकल के 10 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, so 5 zeros. So finally you get AB square is equal to 4 will be cancelled, it will be 400. So this is what AB square. So what will be AB then? So AB shall be equal to under root 40000. So AB मिलेगा आपको 200 centimeter. Now this is the length of AB. If you get your AB as 200 centimeter, tell me students, now the area of equilateral triangle is provided. So we got the AB square. Now this is 200. What will be the radius? Radius will be half. So if I write this point as D and this is E and this is F. Okay. So considering D, so D shall be a midpoint of the segment AB. So let us find the value of D. So यहाँ पे ये मेरा radius, this 2 will be congruent. Now what is this question saying? With each vertex of the triangle as center. Okay. So vertex कैसे? At the center of a circle. A circle is drawn with radius equal to half the length of the triangle. So segment AD shall be equal to half into AB. Why? Because it is provided that the length of the radius is half the length of the side of rectangle. It will be half into 200, which shall be equal to 100 centimeter. So my radius of circle will be 100. Similarly, this is 100, this is 100, this is 100 and this is 100, and also this radius will be also 100. So all the four radius of circle in all the three figures will be 100 centimeter. Now find the area of shaded region. So shaded region will be what? This sector. Okay, so what you have to do, area of the whole triangle minus three sectors 1 2 and 3. कौन से दो तीन sectors है? So these are three sectors. Now can you see in the figure all these three sectors are of equal measure? Yes, they all are of equal measure. So let us find only one sector. So now I'll go. So each sector is of measure 60 degrees. So area of each sector. So सबसे पहले एक सेक्टर का एरिया निकालते हैं, दैट इज ADFE. So it will be theta upon 360 into pi r square. So for that 60 upon 360 into pi 3.14 into radius. So what is the length of the radius? If AD is AB 200 मिला तो AD कितना मिला? 100. So radius will be 100 into 100.
This will become 1 upon 6 into 314 So this is my area of each sector. So let us solve this further. Just calculate this and give me the answer. So dividing it by 3, let's do it by 3. So 3 2s are 6. So it will come 15700 divided by 3 centimeter square. So ये area of sector मिल गया. Now area of the shaded region. So look in the figure. Shaded region will be area of triangle ABC minus area of these three sectors. So let us write area of triangle ABC less 3 times area of sector ADEF. So area of triangle ABC हमें दिया है 17320.5. Minus this answer will be 3 multiplied by 15700 upon 3. So your answer will be 17320.5 minus 15700. Just find this value whatever it's. So the answer will be 1620.5 centimeter square. So let us revise the whole sum back again. Question में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया था, उसके बाद इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या दिया था, एरिया. अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है तो व्हाट आई फाउंड इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल. सो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल कम्स ए बी 200 सेंटीमीटर. अगर ये पूरा 200 है तो दिस रेडियस विल बी 100 सेंटीमीटर. नाउ इफ यू नो द रेडियस व्हाट यू विल फाइंड द सेक्टर का एरिया. सो सेक्टर एरिया ऑफ ईच सेक्टर विल बी 15700 डिवाइडेड बाय 3. नाउ व्हाट इज शेडेड रीजन? शेडेड रीजन शैल बी area of whole triangle, area of triangle ABC minus area of sector 1, sector 2 and sector 3. So area of ABC minus 3 times area of sector ADFE. 3 times why? Because all these three sectors have the same measure 60 degree. So finally we got 1620.5 centimeter square as area of the shaded region. So please note it down. Okay, let us move to the next question. Now read the 11th question. It's a very interesting question and very easy. What is the question saying? There is a square handkerchief, 9 circles of design, each radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. Now area of the remaining portion of handkerchief means you have to remove the circles. So portion of the circle. So there are 9 circles. Area of 1 circle निकालोगे, ऐसे 9 circles का area निकालोगे और वो handkerchief के area से निकाल दोगे. So area of remaining portion of handkerchief will be area of the whole square minus area of the 9 circles. Now tell me, I know the area of 1 circle. Why? Because radius is provided. But what is the to find the area of square ABCD हमें length of the पता होना चाहिए. So we should know the length of AD. Means length of the side of the square we should be knowing. Now in this figure you have to just detect what is the length of the side. So look at the figure and tell me, can you tell me the length of the side of the square? So they have provided the radius in the figure, just read it out. So if I talk about this, so यहाँ पे एक रेडियस बनेगा, यहाँ पे एक रेडियस बनेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे. So from here there will be R, from here to here again R, this will be also R, this will be R, this will be R and this will be R. Means यहाँ पे एक diameter, दो diameter, तीन diameter. Now this AD forms 3 times the radius.
So 3 times the diameter. So you can say length of side of square handkerchief. So it will be how many times? So एक diameter, दो diameter, चार diameter. So it will be 4 times into d. Now what is your diameter? It will be 2 into r. So just substitute 4 into radius is 7. So 7 to the 14. तीन सर्कल्स जहाँ पे एक डायमीटर ये this is the second diameter and this is the third diameter. So AD, how AD is formed? AD is formed by combining these three diameters. So one diameter is of 2r. So I will say 3 into 2 into 7. So let us calculate this. 3 to the 6. It will be 42 centimeter. अब लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर कितना मिल गया? 42 सेंटीमीटर. अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर हैंकरचीफ निकालना है, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर हैंकरचीफ, so it will be side square. So what is the length of each side? AD. So AD whole bracket square 42 into 42. So my area of the square handkerchief, that will come 42 का स्क्वायर आता है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो होल एरिया बिकम्स 1764. इसमें से कितने सर्कल्स हटाने? वी हैव टू रिमूव दिस 9 सर्कुलर डिजाइन. सो एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन, एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन. सो एक सर्कुलर डिजाइन का एरिया निकालना है हमें. सो यू विल यूज द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. So 22 upon 7 into radius here is 7 into 7. So 154, 7 7 तो कैंसिल हो जाता है. 22 into 7, 154 centimeter square. Now area of, let us say, area of remaining portion of the handkerchief. So the leftover portion of the handkerchief means the whole area of square minus the 9 circular regions. Let us write this formula. So आप क्या बनाओगे? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन. सो ये 9 सर्कुलर डिजाइंस का एरिया लेस कर दोगे. सो दिस इज 1764 एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस area of each circular region will be 9 multiplied by 154. So just find this 1764 minus 9 into 154. So it will be 1386. Finally हमें area of square कितना मिल जाएगा? Let us find the remaining portion now by subtracting it. So it will come, I guess, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका आंसर मिलना चाहिए. सो क्वेश्चन कैसा था? बहुत इजी है, कुछ भी ज़्यादा नहीं था. What was not given in the question? Only AD was not given. How we found AD? AD is representing 3 diameters of this circle and this circle. एक डायमीटर कितने मेजर का है? सो 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो एक डायमीटर हो गया 14. सो 14 3 जा 42. सो AD is 42. नाउ AD अगर 42 है तो स्क्वायर फिगर होने की वजह से एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी साइड इनटू स्क्वायर. So 42 into 42, area of whole square figure is 1764. मतलब this whole area is 1764. उसमें से हर एक सर्कल का रीजन निकालना पड़ेगा because 9 सर्कुलर डिजाइन इसमें क्या हुए? रिप्रेजेंट हुए. So let us find the area of each circular design, that is pi r square, 154 centimeter square. This is the area of each circular design. Now how many circular designs are present in the figure? I could see 9 circular designs. So area of the remaining portion of the handkerchief will be area of square minus area of 9 circular designs. So 1764 minus 9 into 154. So what we get? Area of the remaining portion of the handkerchief. Just you have to place and you will get your answer. This is quite easy sum. Please note it down. Okay, बढ़ते आगे क्वेश्चन 12th पर. चलो
Read the question. 12.30 figure OACB is a quadrant. So OACB ये पूरा एक quadrant है with center O. Radius is given as 3.5. So this is 3.5 centimeter. Next thing. OD is given as 2 centimeter. ये कितना है? 2 centimeter. Find the area of quadrant OACB. So OACB is a quadrant. So area of quadrant OACB. So that will be theta upon 360. So into pi r square. For a quadrant, the area, so this angle, what will be that angle? Quadrant hai, so it will be 90 degrees. So let us say 90 upon 360 into pi 22 upon 7 into what is the radius? 3.5 into 3.5. So this answer will be 1 upon 4 into 22 upon 7, 0.5. So 22 multiplied by 0.5. Let's solve this also. 22 into 0.5. This will be 11 into 3.5. So calculate this. It will be, so 35 into 11. Just find this. It will be 35, 35, 385. So 385 divided by 4 and unit you are going to write is centimeter square. So यहाँ तक आपको क्या मिला? Area of the quadrant OACB, and just substitute the decimal. Don't forget it. That is 38.5. So finally मुझे 38.5 ये क्या आ गया? Upon 4, that is area of quadrant OACB. So first part is done. Second part में क्या निकालना है? को area of shaded region निकालना है. So area of shaded region. So in the second part, let's not directly find the area of shaded region. Just see in the figure. क्या आपको शेडेड रीजन के लिए इस क्वाड्रेंट में से कौन सा पार्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD. So let us find that area of triangle OBD. So it's a figure where you will find base into height. So half into OB into OD. Okay, so that will be half into 3.5 into 2. So the area comes 3.5 centimeter square. Now area of triangle OBD you have found it. Now next step will be finding the area of shaded regions. So what we will substitute? Let us write area of shaded region shall be equal to area of quadrant OACB minus area of triangle OBD. So अभी क्या करोगे आप? This 38.5 upon 4 minus, so you can do this part as a homework, that is area of quadrant OACB minus area of triangle OBD. So both the values you have 38.45 upon 4 minus 3.5. That's all. So please note it down and find the final answer. So hope so you will get the answer. Next step is only subtracting this part, so please do it, and after completing your answer, let's move to the next question. Read the next question till on. Okay, so we are done with the 12th question. It's easy. If you want a revision, one simple revision. Quadrant OACB निकालना मुश्किल नहीं है. It was given as it's a quadrant, so theta will be 90 and you have been provided radius. So radius हमारे पास 3.5. फिर next part में shaded region के लिए हमने क्या किया? Area of this whole quadrant minus area of the triangle. Triangle has base and height, so I have to use the formula half into base into height. After finding this, area of shaded region is area of quadrant minus area of triangle. That's all. So let's move to the next question, 13th question. So it's a similar. So can you say this question again? A similar question. Area of shaded region. So area of shaded region के लिए सबसे पहले आपका step 1 area of
quadrant OPBQ. So can you find area of quadrant OP? So this quadrant, can you see OPBQ is a quadrant. So I'll write theta upon 360 into pi r square. So what will be a theta for quadrant? 90 upon 360. अभी जो सम किया वही steps यहाँ पे होंगे. Pi हमें 3.14 बताया. So pi is given as 3.14 in the question. Or radius, what is the radius? So if this OA is given as 20 centimeter and what is not given in the question is the radius of the circle. So यहाँ पे जो quadrant है उसका radius क्या है? We don't know. So let us read it out again. As we don't know the radius, let us draw a figure. So can this be a radius of circle? Yes. जैसे OQ है वैसे OB can be a radius. Now as you know OA is 20, ये भी 20 है. Can you find OB? Yes. So for that let us first find the. So इस फिगर में सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? We have to find the radius. So what we'll do? Construct. So join OB. Now in triangle OBA, can I say OB का square shall be equal to OA square plus AB square? So let us find this 20 square plus 20 square. It will be 2 times 20 square, that is 400 plus 400, total it will be 800. So OB square is 800. So what will be OB? OB shall be equal to under root 800. So you can write this OB is equal to under root 2 times 400. So OB shall be equal to 20 root 2 centimeter. Okay, now this 20 root 2 centimeter means what you have found now? You have found the radius of the quadrant. So now area of quadrant OPBQ shall be equal to 90 upon 360 into what is the value of pi? 3.14 into radius 20 root 2 into 20 root 2. So please solve this and get the answer. So after getting the area of quadrant, next thing you will find area of triangle, sorry, it is a square. So area of square OABC. So OABC is a square, so side square formula लगेगा 20 root 2 whole bracket square. So please find this too. So this square will be 800 centimeter square. Also find this. Now after finding area of quadrant OBP and area of quadrant, what you will do? You will just use a formula. So you have to find this value, everyone. ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओपीबी आपको निकालना है. फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एबीसी में एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसी मिल गया. अब मुझे बताओ एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना मुश्किल है? नहीं. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन शैल बी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट? OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC. So इस figure में again the step will be as like the previous sum. What was not given in the question? As the radius is not given in the question, we have used a trick using a square. में आपको पता है OB will find as a radius of circle which is found as 20 root 2, and later we will find the area of quadrant, then area of square, and then the shaded region. So please complete the sum after finding whatever the values you have. So ये जो box है minus ये हमने already 800 निकाल के रखा है, and finally you will get the final answer as area of the shaded region. So do complete this sum, start noting and find the answers of the boxes. Okay, 13th question. After completing this, hope so you have completed these boxes. Let's move to the 14th question.
सी द फिगर. नाउ दिस क्वेश्चन विल बी गिवन एज अ होमवर्क. सिर्फ अंडरस्टैंड करो कैसे करोगे आप. सो यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन. नाउ उन्होंने हमें क्या दिया, ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली आर टू आर्स. सो दिस टू आर्स ऑफ सर्कल विथ द रेडियस 21 centimeter and 7 centimeter, and O is the center of circle. So यहाँ पे there are two chord sectors, that is one is OCD and other sector is OAB. So I'll for how to find the area of shaded region. Area of sector, बड़ा वाला सेक्टर कौन सा है, OAB. उसके बाद उसमें से छोटा वाला सेक्टर हटा दो, एरिया ऑफ सेक्टर OCD. So you will use your formula theta upon 360 into pi r1 square minus theta upon 360 into pi r2 square. Okay, r1 and r2. r1 is the radius 21 centimeter and r2 is 7 centimeter. So what is theta in both the cases? So 30 upon 360 into, let us take, so इस फिगर में सबसे पहली चीज करो, टेक थिंग्स एज कॉमन. सो यू कैन टेक थीटा अपॉन 360 एज कॉमन. Also you can take the pi common, and then you can write r1 square minus r2 square. So now let's substitute theta upon 360 into, what is the pi value, you can take 22 upon 7, and what will be my r1 square, that will be 21 square minus 7 square. So ये आंसर आएगा 1 upon 12 into 22 upon 7 into, you can write here 21 plus 7 and 21 minus 7. So make it simple, 1 by 12 into 22 upon 7 multiplied by 28 multiplied by 21 minus 7. So it will be 14. So finally after this, now the things are simple. Area of shaded region आपको मिल जाएगा. Do this process and finally get the final answer. Okay, so note it down. After completing the 14th question, let's move to the next question. Okay, 15th question. Now read the question. ABC is a quadrant of a circle with radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as a diameter. Find the area of shaded region. एक बार क्वेश्चन समझ के लो, look it here. तो सबसे पहले एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे मिलेगा आपको. सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये अलग से निकालना पड़ेगा. फिर यहाँ पे एक सेमी सर्कल दिख रहा है जो ये इस तरह से. ओके, ये सेमी सर्कल कहाँ पे है, इस तरह से ये सेमी सर्कल है. सो दिस सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस स्मॉलेस्ट में सेमी सर्कल. ओके, सो ये बहुत क्वेश्चन में डिफरेंस रहेगा कि आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन जाने के लिए आपको सबसे पहले एरिया, यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, यस और नो, उसमें से. सो इफ यू फाइंड इंडिविजुअली, लुक हियर. सो फर्स्ट यू विल फाइंड ABC area. Okay, then you will find this semicircle area, और इसमें से आप कौन सा पार्ट निकाल दोगे, this part you will remove. So this question has to deal with three things, that is area of triangle ABC, then area of larger semicircle, and then area of smaller semicircle. So three different things are present in the question. Hope so you can see the three different पिक्चर्स ऑफ दिस. तो ये एक छोटा सा सेमी सर्कल है और ये एक बड़ा सा सेमी सर्कल है. ओके, सो इस फिगर में अगर आप ये चीज ध्यान देते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. लेट्स डू द सॉल्यूशन. ओके, देखो इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, रीड द क्वेश्चन. रेडियस 14 सेंटीमीटर. सो दिस इज रेडियस इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर. नाउ ये जो सेमी सर्कल BC पे ड्रॉ हुआ है उसके लिए डायमीटर BC ढूंढनी पड़ेगी. नाउ दिस इज 14 एंड दिस इज 14. यू हैव टू फाइंड द रेडियस, दिस हाइपोटेनियस. व्हेन यू फाइंड दिस हाइपोटेनियस यू आर गोइंग टू गेट. सो अगर ये हाइपोटेनियस पता चलेगा तब हम ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकते हैं. सो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, angle A is equal to 90 degree as it is a quadrant. So we can say BC square is equal to AB square plus AC square. So BC square shall be equal to 14 square plus 14 square.
so BC shall be equal to 2 times 14 square. So BC shall be equal to under root 2 into 14 square. We can say BC shall be equal to 14 root 2 centimeter. So now this hypotenuse is 14 root 2 centimeter. Now you have got this as a diameter of a figure. So BC is 14. So if I take a point here as a center of circle O, and if I say this is E point and this is a D point. Okay, so now look in the figure. If the diameter is BC is how much? So diameter of the figure is 14 root 2. So if I talk about the radius, OB is the radius of circle. So I can say that will be 7 root 2 centimeter. Okay. Next thing, I will find first area of triangle ABC. Anything difficult to find? No. Half into 14 into 14. So it will be 7 multiplied by 14 sevens. So now you have found first thing. आपको सबसे पहले क्या मिल रहा है? Area of सर्कल. सो एरिया ऑफ सर्कल मिलने, सो दिस इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. सबसे पहले हमें ट्राइंगल ABC का एरिया मिल चुका है. ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे एक सेक्टर दिखाई दे रहा है ABCD. सो लेट अस फाइंड दैट सेक्टर एरिया. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. सो दिस क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABEC, ABEC, ये पूरा क्वाड्रेंट की एरिया कितना है? इट विल बी थीटा अपॉन, यू कैन से डायरेक्टली बाय वैल्यूज हम अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन क्वाड्रेंट? इट विल बी 90 अपॉन 360 इंटू व्हाट इज माई वैल्यू ऑफ पाई? 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस दैट इज 14 इंटू 14. So this answer it's going to be 1 upon 4 into 22 into 7 into 14. So finally area of quadrant the area of the quadrant, it will be 2 2s are 2 11, 2 1s are 2 7s are, finally it will be 11 into 7 into 7. So this value will be 154 centimeter square. Now area of quadrant ABC, ये जो क्वाड्रेंट है यानी ये फिगर पूरा एक एरिया है, इसमें से अब नेक्स्ट निकालोगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन BC. BC पे एक सेमी सर्कल है इतना बड़ा. ओके, इस सेमी सर्कल का एरिया निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो आप? सेमी सर्कल का हाफ इंटू पाई कितना लोगे? 22 अपॉन 7 इंटू, अब BC इज अ डायमीटर, उस BC का रेडियस कितना है? 7 रूट 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर. सो इन द 15th क्वेश्चन व्हाट वी हैव फाउंड, so area of semicircle drawn on BC, let us find this value. Half into 22 upon 7 into, what is this? 49 into 2. Now this 2 cancels, 7 on the 7, 7 7 49, so ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस 22 into 7 मिल जाएगा आपको. नाउ अभी आपको क्या क्या चीज मिल गई? एरिया ऑफ ट्राइंगल. नाउ लुक द फिगर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. जरा ध्यान देना, शेडेड रीजन में देखो सबसे पहले सारी चीजें ऐड कर देते हैं. पहले मैं क्या निकालता हूं? दिस होल पोर्शन, विच वन? क्वाड्रेंट ABEC, ये पूरा पोर्शन. उसके बाद इन दैट क्वाड्रेंट आई हैव आल्सो एडेड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. उसके बाद चलो एक 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 फिगर को ब्रेक करते हैं. लेट्स ब्रेक दिस फिगर. एक तो मेरे पास एक सेमी सर्कल है ऐसा. अदर थिंग, यहाँ पे एक ट्राइंगल है और इसके अंदर एक पोर्शन ऐसा है. नाउ
दिस फिगर व्हाट वी से ए बी सी। ओके, अब आपके पास शेडेड पोर्शन सिर्फ इतना पार्ट है, मतलब आपका एक सेमी सर्कल सबसे पहले आप कर दो। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन बीसी। बीसी पे जो मैंने सेमी सर्कल है उस सेमी सर्कल में से, ओके, अब इस सेमी सर्कल में से अगर आपको सिर्फ ये पोर्शन हटाना है, विच वन, नाउ यू हैव टू ओनली रिमूव दिस पोर्शन, विच वन, इतना सा पोर्शन निकालना है। तो उसको इतना पोर्शन अगर हटाना है, दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ सेगमेंट। सो सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, और यू कैन से क्वाड्रेंट, विच क्वाड्रेंट, you have found that quadrant, area of quadrant ABEC, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना पड़ेगा। यस और नो। सो फाइनली हमें, अगर आपकी फिगर को आप एनालिसिस करते हो, अगेन आई विल एक्सप्लेन इट बिकॉज इफ यू गेट कंफ्यूज प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले ये फिगर इस तरह से है, एक ट्राइंगल है, बिगिन क्या करोगे, सबसे पहले एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, दिस इज द शेडेड पोर्शन यू हैव टू फाइंड। सो जो शेडेड पोर्शन निकालना है, यहाँ पे देखो, ये शेडेड पोर्शन निकालने के लिए, ओके, सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी सी डी, ओके, दैट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन बी सी। उसके बाद आपको उसमें से कौन सा पार्ट लेस करना है, ओनली बी ओ सी ई पार्ट, दैट इज द सेगमेंट पोर्शन। सो सेगमेंट पोर्शन का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ई सी, ये जो है ये एक सेक्टर है, उसमें से कौन सा पार्ट हटा दोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो उसके लिए इनडायरेक्ट इफेक्ट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो जस्ट सब्सटीट्यूट, ये कितना है 154 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी ई सी, वो क्वाड्रेंट का वैल्यू भी 154 है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इट इज 98। सो फाइनली 154 माइनस 154 प्लस 98, so answer will be 98 centimeter square, that is area of shaded region। okay, so that is a very logical part to understand। आप सबसे पहले पूरा सेमी सर्कल कौन सा, जस्ट आई यूज अ रेड ग्रीन पेन, प्लीज पे अटेंशन। मैंने सबसे पहले इतना एरिया निकाला, ओके, अब इतना एरिया निकालने के बाद कौन सा पार्ट निकालना है, समझो ये एरिया निकाल दिया, उसके बाद मैं इसमें से कितना पोर्शन हटाना चाहता हूं, ओनली दिस पोर्शन, दिस स्मॉल पोर्शन। नाउ उस पूरे सेमी सर्कल से इतना पोर्शन हटाने के लिए इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेगमेंट। सो सेगमेंट का फॉर्मूला लगेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सो दैट्स व्हाट आई हैव यूज्ड हियर एंड द आंसर फाइंड्स एज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सब लोग यहां से नोट डाउन कर लो, प्लीज नोट इट डाउन। Okay, let's move to the 16th question. Look at the question. So calculate the area designed in figure 12.34 in common between the two quadrants of circle of radius 8 centimeter. Now ये यहाँ पे एक कॉमन रीजन है जहाँ पे एक डायमीटर में निकाल एक, ओके, सो आई कंसीडर दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अगर इस फिगर को अलग से निकालो तो इट विल बी लुकिंग एज सच। सो यहाँ पे एक फिगर ए बी सी डी है, दे हैव वन डायमीटर, दिस इज द डायगोनल, और यहाँ पे एक ऐसा रीजन है और एक ऐसा रीजन है। नाउ
if you see, the design is lying between these two regions. Now these two regions are going to be a equal regions. Okay, so now if I extract only one part of the figure this way and this way, and I'm telling you find the area of this part. So for that, this is my A, this is my B, and this is my C, considering this as E point. Now tell me, this is 8 centimeter, 8 centimeter, and this is 9. Now right now, जो ये एरिया होगा ऊपर का पार्ट, ये हाफ, वही ये नीचे का पार्ट होगा. मतलब this area and this area are equivalent. So your task is only finding segment area of segment AEC. Okay, अगर आपने area of segment AEC निकाल दिया तो you will get your answer for. So whatever this segment it will be, I'm going to do twice of that. Why? Because this both the portions are equal in measure. So figure अगर आपको समझ में आया तो I could start with the sum. So what we will say, the designed area is common between sectors. So let us say this is E and this is D part. Okay, so पहला यहाँ पे in sector AE, ABCE and sector उस तरफ से ADCF. ओके, सो ये जो एरिया है, द डिजाइंड एरिया, इट इज कॉमन बिटवीन बोथ द सेक्टर्स. सो फर्स्ट फाइंड ओनली द एरिया ऑफ सेगमेंट. नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट AEC. अगर एरिया ऑफ सेगमेंट AEC निकालना है तो दो चीज पता होनी चाहिए. कौन सी? एरिया ऑफ द सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो फर्स्ट विल फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर. Which sector? Let us find area of sector ABCE. Okay, so it will be 90 divided by 360 into pi. So pi, what is given in the question? If it's 22 upon 7 into, what is my radius in the given question? It is 8 centimeter. So let us find this. It will be 9 4s are 36. 8. Okay, so area of sector ABC means this whole portion from here, ये पूरा फिगर का पोर्शन एरिया कितना होगा? So it will be 352 upon 7 centimeter square. Now from this part, what you have to remove? You have to remove the area of the triangle part. So area of triangle BAC निकालोगे आप नेक्स्ट में. चलो area of this triangle, so ABC area का triangle. So let us find area of triangle ABC. So it's a right angle triangle. So half into base कितना लेंगे हम लोग? Base हम AB लेते. So base BC and height half into 8 into 8. So it will be 2 4 8 4s are 32 centimeter square. Now area of segment. Which is the segment we were finding? We were finding the segment AEC. So area of segment AEC is equal to area of sector ABCE minus area of triangle ABC. So let us find this. Area of sector, this is 352 divided by 7 into, sorry, minus 32. So area of segment AEC सबसे पहले निकलेगा. So find this area. So this, do a cross multiplication. 352 upon 7. Let's keep a common denominator. 7 minus 32 into 7. 7 2s are 14. 7 3s are 21, 22. So 2 2 4. Now 352. This is 128 upon 7. Okay. So area of this segment portion will be 128
ऑन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, ये पोर्शन मिला है, ऐसा पोर्शन इस बाजू में भी है। ओके, सो सिमिलरली एरिया ऑफ सेगमेंट विच विल बी द सेकंड सेगमेंट, दिस वन, एज वी नो दिस डिजाइन इज कॉमन बिटवीन बोथ द पोर्शन। सो एरिया ऑफ द, what is asked, find the area of the designed region. Designed region will be equivalent to 2 times 128 upon 7, or you can say 2 times area of segment AECY, because both the designs are equivalent in both the ends. So 2 into 128 upon 7, so it will be 256 upon 7 centimeter square. Okay, so area of the designed region, again let's, हमें मिल चुकी है। कैसे पढ़ निकाला हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, एक सेक्टरल पोर्शन, एक सेगमेंट पोर्शन का एरिया निकाला। जैसे ये फिगर को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया, ए बी सी इतना पोर्शन। ओके, तो इतने से पोर्शन में से हमने कैसे निकाला, सबसे पहले ये शेडेड रीजन निकाला। कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ई सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो एरिया ऑफ सेगमेंट ए ई सी मिल गया। So what is this? Area of sector ABC, then area of triangle ABC, and then we find area of sector AEC. Means only this part is the area which is 128 upon 7. अब ऐसा ही पार्ट क्या नीचे भी है? यस, इक्विवेलेंट, कंप्लीटली सेम टू सेम, यस। सो उसके वजह से 2 times area of segment AEC will be the designed region. Okay, so 2 into 128 upon 7, it comes 256 upon 7. So इस तरह से we are completing the sum. So please note it down, and this way we have also ended the chapter. So note it down from here. Please draw this figure, as it will be helpful for you to understand how the figure is been broke. Please revise the whole chapter. It's a key, important, big, large chapter, and all these sums need to be revised. Unless you don't revise, you won't be able to have a good confidence in practicing this question. So while completing the chapter every day, take 4 to 5 sums and do the practice.